वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ जीत। आप देख रहे हैं जीत द बॉन्ग राइडर चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ टायर के बारे में। बहुत किस्म के टायर होते हैं गाइस, जैसे फैट टायर, पतला टायर, बर्फ में चलने वाला टायर, ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग। तो हम लोग पूरा तो कवर अप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत मैं आज बताऊंगा आपको। जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ मैं आप लोगों से वही शेयर करूंगा। तो मैं पहले क्या हुआ था, फैट टायर लगाया था अपना पल्सर 150 में। तो बहुत जन मुझे बोला था कि माइलेज इससे कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब गलत बात है। इससे आपका माइलेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन स्टाइल बहुत अच्छा मिलता है। तो टायर मेरा बहुत ख़राब हो गया है, इसलिए मैं चेंज करके इस बार ऑफ रोडिंग टायर लगा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ऑफ रोडिंग टायर लगाने से ग्रिप कैसा मिलता है मुझे, और अगर मैं ऑफ रोड में जाता हूँ तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मैं ऑफ रोडिंग टायर लगा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, पास में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मेरा पल्सर 150 का टायर देखिए पूरा घिस गया है। ये मेरा फैट टायर था, 180 का टायर मैं 150 में लगाया था, तो इससे मेरा माइलेज कोई भी कम नहीं हुआ था। अब ये मैं नया टायर खरीदा हूँ, जेके का है। देखिए ऑफ रोडिंग टायर है। इसका जो ग्रिप देख रहे हैं, छोटा छोटा ऐसे ग्रिप बना हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको ऑफ रोडिंग में अच्छा ग्रिप मिलेगा, और ऑन रोडिंग में भी ये अच्छा चलेगा, और बारिश के टाइम में भी आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा। ऐसे ही दुकानदार ने बोला, इसीलिए मैं खरीदा हूँ। ट्राई करके देखता हूँ कि कैसा चलता है ये वाला। तो चलिए अब इसको लगाते हैं, आपको दिखाता हूँ। You and me, hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly, the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back